when you come into big events like this, you need your experienced star players there playing well and standing up in big moments if you're going to win. And that's what I said about Virat at the start. I think we saw that firsthand with the first game against Pakistan. I doubt if there was another player in that side that could have got them over the line at the end. It's the T20 game. तो दोस्तों सुना ना आपने रिकी पॉन्टिंग को, ये तो सिर्फ एक झलक थी। मैंने एकदम जस्ट 20-30 सेकंड की आपको बाइट सुनाई है जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने साफ साफ कहा कि विराट कोहली ने जो पारी पाकिस्तान के खिलाफ खेली वैसी पारी शायद कोई और नहीं खेल सकता था। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी तारीफ की और उन्होंने यही कहा कि बड़ा प्लेयर वही होता है कि वो जो बड़े मोमेंट पे खड़ा होता है, और विराट ने वही साबित किया। और विराट की उन्होंने बहुत जमकर तारीफ़ की है रिकी पॉन्टिंग ने। मैं भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, आपको और बताऊंगा कि भाई विराट के अलावा और किन किन टॉपिक पे रिकी पॉन्टिंग ने कहा, क्यों वो विराट के मुरीद है, क्यों ये कह रहे हैं कि भारतीय जो आलोचक हैं वो ज़बरदस्ती विराट के पीछे पड़े हुए थे। आप खुद से सुनिएगा। लेकिन पॉन्टिंग ने आज एक बहुत ही बड़ी बात की विराट कोहली के बारे में। दोस्तों आज रिकी पॉन्टिंग से जब मुलाकात हुई तो बड़ा मज़ा आया। और रिकी पॉन्टिंग वो उन चुनिंदा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में है जिनसे मेरी थोड़ी सी, मैं दोस्ती तो नहीं कहूँगा, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, ऐसे खिलाड़ी जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और मेरे लिए एक खुशनसीबी की बात है कि ये लोग मुझे जानते हैं। और आज मैं रिकी पॉन्टिंग से मिला तो मैंने उनको कहा कि बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात है, क्या आपको याद है 2015 में मैं आपके घर बिताया था करीब 1-1.5 महीने। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और उसके बाद जो सवाल जवाब मैंने किए उनसे आपको मैं दिखाऊँगा ही। और लेकिन रिकी पॉन्टिंग का बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम प्रोफेशनल। और आके जिस तरह से खुद ही जब वो पहली बार जैसे आए तो उन्होंने ऑब्ज़र्व भी किया, हेलो खुद से उन्होंने किया। नॉर्मली मैं भी थोड़ा सा हिचक के गया। तो उनको बेसिकली यादें हैं और ऑब्जर्वर के तौर पे बहुत बड़े ऑब्जर्वर हैं। और क्रिकेट की बातें तो करूंगा, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा जो एक निजी किस्सा है, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने तो सुना है कि भारतीय खिलाड़ियों के साथ जो भी हैं ओवर द 20-22 सालों में जो जिस तरह से उनसे पहचान बनी है, रिश्ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय खिलाड़ी, कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी, कुछ दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भी थोड़ी बहुत जान पहचान है। और वक्त कभी मिलता है उन्हें तो वो खिलाड़ी पहचानते हैं और बात कर लेते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है। और फैंस रिपोर्टर होने के चलते मुझे लगा कि भाई आप लोगों को ये किस्सा सुनाऊं, चूँकि अपने किसी चैनल में या प्रोफेशनल जो सेटअप है वहाँ तो ये सब बातें नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग को बताऊं। चलिए अब रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ। Ricky, you spoke about Virat Kohli's innings against Pakistan. Just before the World Cup, in fact, for the last 1.5 years, there was criticism, especially in India, about Virat's form. And some people suggested that he should not be the part of the 11. How do you look at his transformation? What do you think that what he has done, correct to be in such a sparkling form? Yeah, look, I've been on record for the last few months, talking about how important I felt it was that India did stick with Virat coming into a big tournament like this. And the one issue that India had was that all the cricket they've been playing and rotating players in and out, it was, when you're giving highly talented young Indian players an opportunity to play in the national team, more often than not they're taking their chances, which when Virat wasn't in the side and these other guys coming in and making runs, it made it almost harder for India to keep sticking with him and picking him. But when you come into big events like this, you need your experienced star players there playing well and standing up in big moments if you're going to win. And that's what I said about Virat at the start. I think we saw that firsthand with the first game against Pakistan. I doubt if there was another player in that side that could have got them over the line at the end. It's the T20 game. I think is a game for the older, smarter sort of minds, the people that have been there and done it all before and experienced it all before. And probably no one in Indian cricket's experienced more success than Virat Kohli. So as slim as the chances were the other night, as I said, I was sitting home on the couch watching with 8 balls to go with him on strike. I still had this feeling that he was just going to pull something out of the hat, and he did. And quite often, a little moment like that can have a really big impact on a team right the way through the tournament. India probably haven't been at their best yet. Virat's been very, very good in a couple of games. Now the leading run scorer in the history of T20 World Cup cricket. And I think if India are to go on and progress and actually win, they need Virat there and they need him playing well. तो सुना ना आपने, अपने कानों से सुना रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली के बारे में क्या कहा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच चल रहा था उसमें मैंने सोफे पे बैठा हुआ था, देख रहा था, 8 गेंद में 28 रन बनाने थे और मुझे लगा कि अब यहाँ पर विराट कुछ ना कुछ हैरत अंगेज करेंगे, कुछ असाधारण करेंगे। और एग्जैक्टली विराट ने वही किया।
और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि भारतीय चयनकर्ताओं ने कई युवा खिलाड़ियों को मौके दिए और भारत को ये समस्या हो गई कि किसको रखें नहीं रखें, लेकिन विराट कोहली के बारे में कभी सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे ज़्यादा अनुभवी कोई नहीं है, उनसे बड़ा मैच विनर कोई नहीं है। पॉन्टिंग ने ये भी कहा कि जिस तरह की पारी विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ खेली है, अक्सर ऐसी पारियां पूरी टीम को एक अलग लेवल पे ले जाती हैं। और उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की पारी विराट ने खेली है, कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो टीम इंडिया को फाइनल में जीत दिलाए। तो बहुत ही खुले दिल से पॉन्टिंग ने तारीफ़ की, और एक बहुत बड़ी बात है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं, वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा, ज़बरदस्त ब्रेन है, और उन्होंने पूरी तरह से अपना वेट जो है विराट कोहली के पीछे थ्रो किया है। Ricky, just on a follow up on that, you have been saying that India has not looked at its best. What do you think? What has been missing? What they need to do, because now they are in the business end of the tournament? I think one obvious omission is Bumrah not being there. When you take one of the best players in the world out of any side in this sort of format, it's always really hard to replace that. I've actually been a little bit surprised that I thought a lot of the venues and the wickets being as quick and bouncy as they are, I thought most teams would have scored a few more runs than they have. It just seems like those really big scores haven't been made, apart from Riley Rousseau and Phillips. The really big scores haven't been made. So that might happen in the back half. So let's wait and see. हाँ, पॉन्टिंग ने इस बात पर हैरानी जताई कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बड़ा स्कोर अब तक क्यों नहीं खड़ाया गया। जिस तरह का उनकी बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह का विकेट्स पे खेले हैं, ज़्यादा रन बनाते हैं, इस बात से उनकी हैरानी हुई है। आगे पॉन्टिंग से ये भी पूछा गया कि भाई अब सेमीफाइनल में वो किस तरह से देखते हैं, किस टीम को चैंपियन बनते देखते हैं, कौन सी टीम फाइनल में पहुँचेगी। तो पॉन्टिंग ने कहा कि मैंने टूर्नामेंट से पहले ही कहा था कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फेवरेट टीमें हैं, और make it through to the semi-finals. First of all, the Super 12 matches have been unbelievably competitive. Who do you see playing in Sydney on the 9th and then in Adelaide on the 10th? I'm not sure which team's going to be where, but South Africa have been a bit of a surprise packet for me so far. Maybe a month out before the tournament started, and with the way things were tracking and trending, I thought the winner of the tournament would come from either Australia, India, or England. I'm not going to change away from that right now. I think South Africa and India will go through, and then obviously Australia have got their backs to the walls in their group. Their last game, they're going to have to win that game really, really convincingly, and then sit back and wait for what happens in the result the next day. So I'm not going to go away from my early prediction. I think India haven't probably quite played their best cricket just yet, but I think the further they go, and with a bit of a turnaround in fortunes for Virat, that I think they'll make it to the final. And yeah, let's see what happens in the other group. I mean, New Zealand, we should never write them off either in these ICC events. They always find a way to be up there and play really good, high-level white ball cricket in particular. So yeah, if it is New Zealand and England, that will actually be an awesome, to get those two teams through. They've both played some great cricket so far, and the Aussies have been a bit like England, like India. They just haven't seemed to get it all right just yet. But this is a funny game, T20 cricket. It just takes, sometimes one or two standout performances in your starting 11, and that's quite often good enough to win games. And Australia are going to have to do that now. They would have talked long and hard about trying to peak at the back end of this tournament when the big games come around. Well, they've got that all ahead of them coming up in a couple of days' time.